word starting with ra, I don't feel stammering. But when I will speak ra second word, uh, I stammer there, sir. तो सेकंड वर्ड जब आता है तो उसके पहले कौन सा वर्ड आता है? इफ रा इज अ सेकंड कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट कौन सा होता है? Na, एग्जांपल? ya, like in Kannada, there is a word na nara, Okay. like that, and words like ya yaru, yarige in Kannada, sir. तो आपका क्वेश्चन है कि जब वो सेकंड पोजीशन पे आता है र Yes, sir. इन वर्ड्स, नॉट अ सेकंड कॉन्सोनेंट। सेकंड कॉन्सोनेंट का मतलब होगा पी आर टी आर के आर, वहां पे र सेकंड पे आ रहा है पोजीशन पे, वो प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपका प्रॉब्लम है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, Yes, जैसे sir. कि वो ना के बाद रा सेपरेटली आया तो। Yes, sir. तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपका रा का प्रॉब्लम है तो रा मोस्टली निकलता है टंग वाइब्रेशन के साथ। Yes, sir. अब जो आपका टंग वाइब्रेशन होता है, टंग वाइब्रेशन अच्छा तब हो पाता है जब आपका माउथ ओपन अच्छा होता है, जैसे कि रा, बट रा comes very effectively when I open mouth effectively, ra, but when I say ra, आ रहा है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, बट नॉर्मली अगर आप उसको ओपन करते हैं माउथ को तो रा काफी इजीली बाहर आता है, रा। ठीक है, Yes. सो हो सकता है कि शायद जब आप पहला कॉन्सोनेंट बोलते हैं फॉर सेकंड कॉन्सोनेंट आपका माउथ इतना ओपन नहीं होता जितना वो होना चाहिए फॉर र प्रैक्टिस। Okay. जैसे आपको बोलना है नारायण, so when I say the word na, for ra your mouth is not opening effectively, let's say आप ऐसा बोल सकते हैं नारायण, okay, Yes. but you should say like this, narayan, narayan, narayan. So you should practice this word separately. First say the na and then for ra you should open mouth, na ra, na ra, narayan, naru, yaru, yaru, yaru. Okay, so for second ra practice separately, वर्ड्स के सेपरेट करो, ना एंड रास डिफरेंट करो, उसके बाद उसको मिक्स करो, बट व्हेन यू मिक्स मेक श्योर आपका माउथ ओपन फॉर र ऑल्सो। Okay.